जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बीपीएससी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसको हम लोग 2 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द अयोध्या इंसिडेंट इन 92 विधानसभा इन सम स्टेट वाज डिसॉल्व आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच स्टेट द विधानसभा वाज नॉट डिसॉल्व। कहाँ डिसॉल्व नहीं हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार एंड ई नन ऑफ द अबव। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिहार। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव कॉमन सिविल कोड? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी गोवा एंड ए नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोवा। हाउ मेनी reorganized state had bicameral legislature in 1956? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 5, बी में 10, सी में 15, डी में 18 एंड ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंट ऑफ द स्टेट आर कंट्रोल्ड बाई। ऑप्शन ए गवर्नर, बी में चीफ मिनिस्टर, सी में स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी, डी में सीएजी एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, अच्छा मोर देन वन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। Question number 5, the contingency fund of the state is operated by A, governor of the state, B, chief minister of the state, C, the state finance minister, D, state legislature and option E। तो 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन 6 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। The chief minister generally preside over the cabinet meetings. The governor has to exercise all his functions on the advice of chief minister. The ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister. And option E, none of the above, या तो फिर more than one। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द गवर्नर हैज टू एक्सरसाइज ऑल हिज फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। Question number 7, which article of the Constitution define the duty of the chief minister? Article 162, 164, 165, 167 and option E none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 7 का द राइट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 167।
क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? किस स्टेट में पहला चीफ मिनिस्टर वुमेन थी? ऑप्शन है यूपी, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो 8 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है यूपी। कमेंट बॉक्स में सीएम का नाम मेंशन कीजिए। The first question number 9, the first woman CM of an Indian state was Vijay Lakshmi Pandit, Sucheta Kriplani, Nandini Satipathy, Sarojini Naidu and option E none of the above। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द नोमेनक्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज चेंज्ड फ्रॉम सदर ए रियासत टू गवर्नर इन 1965 बाई। ऑप्शन है ए लोकसभा रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी में द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द 6th अमेंडमेंट इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी द स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 371 एंड ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी द 6th अमेंडमेंट इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, legislative assembly and council, legislative assembly and governor, governor, legislative assembly, council, where it exists। तो इसका ऑप्शन है तो कौन सा सही आंसर होगा? क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन 4, ये जो 4 वाला यानी कि कहाँ पे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? केरला, फर्स्ट में केरला, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। केरला में तो है नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, सिर्फ बिहार में है। तो बिहार का कौन सा ऑप्शन 4 कहाँ पे? ऑप्शन डी में है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इसको जो में निकाल देते हैं। इसको ऐसे देखने में सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, select the constitutional duties of the chief minister from the following by using the code given below। The chief minister communicate to the governor all decisions of the council of minister related to the administrations of the affair of the states। The chief minister communicate to the governor the proposals of our legislation। The chief minister participate in the meetings of the National Development Council।
The Chief Minister submit for the considerations by the Council of Ministers any matter on the which decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council of if they are the governor require. तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है 13 का डी। अब हाई कोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द पेंशन ऑफ द रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट वेयर ही वेरी लास्ट सर्व, consolidated fund of the different state where he has served, and contingency fund of India, and option E। तो 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, consolidated fund of India। क्वेश्चन नंबर 15, the age of retirement of a high court judge is 65, 60, 62 and 58। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का 62 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ हाई कोर्ट इन इंडिया। ऑप्शन ए में क्या है? द सेकेंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स एपिलेट jurisdiction। Every judge of a high court is appointed by president। Governor of the state appoints the judge of high court। और यह हाई कोर्ट में एक्सेप्ट ए पिटिशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन सी। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द जज ऑफ ए हाई कोर्ट। गवर्नर ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन 18, the salary and allowance of the judge of a high court are charged to the Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of the State, Contingency Fund of India and Contingency Fund of the State। ये कौन सा सही है? क्वेश्चन 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी, Consolidated Fund of the State। Question 18, the number of high court of judicature in India is option A 25, option B 21, option C 22 and D में क्या 23 and option E none of the above। तो 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 25। Question number 19, when the chief justice of a high court act in an administrative capacity, he is subject to the writ jurisdictions of any of the other judge of high court। Option B, special control exercised by the chief justice of India, discretionary power of the governor of the state, special powers provided to the chief minister in this regard, and option E none of the above। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द writ jurisdictions of any of the other judge of the high court।
Which High Court stated that divorce by saying talaq three times is illegal? Option A Calcutta High Court, option B Allahabad High Court, option C Bombay High Court, and option D Punjab High Court, and option E none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट। 21. Which one of the following high court had territorial jurisdictions over Andaman and Nicobar Island? Option A Andhra Pradesh, B Calcutta, C Madras, D Odisha, and option E none of the above. 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी कैलकाटा। Question number 22. Which of the following high court has its jurisdictions over more than one state or UT? ऑप्शन ए में इलाहाबाद, बी में दिल्ली है, सी में गुजरात, डी में महाराष्ट्र, ई में नन ऑफ द अबव से मोर देन वन। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गोवा के पास गोवा का भी हाई कोर्ट दोनों का सेम है, बॉम्बे हाई कोर्ट। Question number 23. Which one of the following Indian state does not have its own high court? खुद का हाई कोर्ट किसके पास नहीं है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी मिजोरम, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो 23 का सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम। Question number 24. How many high courts in India have jurisdictions over more than one state, union territory included? ऑप्शन ए 2, बी में 3 है, 5, 6, सी में 5 है और डी में 7 है। तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7। Which of the following high court has the largest number of benches? ऑप्शन ए कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन डी इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव। तो 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बॉम्बे हाई कोर्ट। Question number 26. Which one of the following subjects comes under the common jurisdiction of Supreme Court and High Court? Mutual disputes among states, disputes between center and state, protection of fundamental rights, protection from violation of the constitutions, and option E none of the above. तो 26 का सही आंसर ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Question 27. In which petition judiciary order executive to perform their duty? Habeas corpus, mandamus, prohibition quo warranto? 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी mandamus। 28. When the Supreme Court issue a writ to a person or to an institution to perform its duty, it is called certiorari, mandamus, quo warranto, and habeas corpus। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन बी मैंडेमस। क्वेश्चन 29. Which one of the following is not which one of the following is not the main jurisdictions of the High Court of a state? Advisory jurisdiction, original jurisdictions, supervisory jurisdictions, appellate jurisdiction, and option none of the above। तो 29th का सही आंसर है ऑप्शन ए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। Question number 30. Which among the following is issued when the procedure is pending in court? Mandamus, certiorari, prohibition quo warranto, and option E none of the above। तो 30 का करेक्ट आंसर है
Option C, prohibition. Question 31. The writ of certiorari issued by the Supreme Court. Option A, to an inferior court to transfer the record of proceeding in a case for review. Option B, to an inferior court to stop further proceeding in a particular case. C में क्या है? To an officer to show his right to hold a particular office. To a public authority to produce a person's detained by it before the court within 24 hours. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. Which of the following reads examine the functioning of the subordinate courts? Option A, Q warranto, B mandamus, C certiorari and D habeas corpus. तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्चरी. What is the nature of the disputes of the Babri Mosque and Ram Janmabhoomi case before Allahabad High Court? Option A, writ petition, B title suit claim for competitions and option D judicial review petition. तो 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टाइटल सूट. Question number 34. According to the Constitution of India, the term district judge shall not include option A, chief presidency magistrate, session judge, tribunal judge, and chief judge of a small cause court, and option E, none of the above. तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रिब्यूनल जज. ये डिस्ट्रिक्ट जज की कैटेगरी में नहीं आता. Question number 35. The term district judge is mentioned in which of the following article of the Constitution? Option A, Article 230, option B, Article 231, option C, Article 232, and option D, Article 233. तो 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 233. A High Court judge addressed his letter of resignation to the President, the Chief Justice of India, the Chief Justice of his High Court, and the Governor of State. तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट. Against which judge the Raj Sabha passed the motion of impeachment in 2011, but he resigned to save himself before it could be passed by the Lok Sabha. Option A, Justice B Ramaswamy, option B Justice Bhattacharya, option C Justice Sumitra Sen, and option D Justice PD Dinakaran. तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस सुमित्रा सेन. The mobile code in India is the brainchild of Justice Bhagwati. Option B, Mr. राजीव गांधी. सी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. डी में मिस प्रतिभा पाटिल. एंड ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव. तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम. Under preventive detention, a person can be detained without trial for option A 1 month,
B 3 month, option C 6 month, option D 9 month, and E none of the above, one more than one. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 मंथ. Name the chairman of the law commission who advocated that one-third of the judges in each high court should be from another state. ऑप्शन ए में क्या है? जस्टिस पी.एन. भागवती, बी में जस्टिस हिदायतुल्ला, सी में जस्टिस एच.आर. खन्ना एंड डी में जस्टिस चंद्रचूड़. तो 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस एच.आर. खन्ना. Question number 41. Consider the following statement. There are 25 High Court in India. Punjab, Haryana and the UT of Chandigarh have a common High Court. National Capital Territory of Delhi has a High Court of its own. Which of the following statement given above is correct? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों सही है. Question number 42. Consider the following statement regarding High Court in India. फर्स्ट में क्या दिया? There are 18 high courts in the country. 3 of them have jurisdictions over more than one state. No union territory has high court of its own. Judge of high court hold office till age of 62. तो which of the following statement are correct? कौन सा करेक्ट ये पूछा गया है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन 43 है. Indian Constitution presents 3 lists for the distribution of power between the center and the state. Which 2 articles regulate the distribution? Option A, Article 4 and 5. Option B, Article 56 and 57. Option C, Article 141 and 142. Option D, Article 245 and 246. तो 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आर्टिकल 245 एंड 246 पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. तो क्वेश्चन नंबर 44. Article 249 of the Indian Constitution deals with emergency power of the President, dissolution of Lok Sabha, administrative power of the Parliament, and option D में क्या है? Legislative power of the Parliament with respect to matter in the state list. तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन डी. The financial relations between the union government and the state have been discussed under sorry, Article 168 to 171, Article 268 to 281, Article 278 to 291 and option D में Article 289 to 295. तो 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 268 से लेकर 281 तक.
Under which article of the Constitution of India taxes are levied? सॉरी, फिर से देखते हैं. Under which article of the Constitution of India taxes are levied and collected by the center but dispersed, distributed between the center and the states? तो ऑप्शन है आर्टिकल 268, 269, 270, 271. तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 270. Question 47. A resolution passed under clause 1 of Article 249 shall remain in the force for a period of not exceeding. Option A 1 month, option B 3 months, option C 6 months, option D 1 year, and option none of the above. तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 year. 48. Subject on which center and the state both can make law are mentioned in which of the following list? Option A union list, option B state list, C concurrent list, D residual list, and E none of the above. तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट. तो इजी क्वेश्चन है. relation of center state lies in the which of the following schedule? 7th schedule, 8th schedule, 6th schedule and 9th schedule किस में आता है? ये आता 7th schedule में आता है. The distribution of legislative power between center and the states in the Constitution is given in 6th schedule, 7th schedule, 8th schedule, 9th schedule, and option E none of the above. तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 7th schedule. In which part of the Indian Constitution legislative relations between center and states are given? Option A part 10, option B part 11, option C part 12, and option D part 13. तो 51 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्ट 11 में दिया हुआ. Question number 52. Who is vested with the residuary power in Indian constitutions? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी में स्टेट है, सी में सेंट्रल कैबिनेट, डी में पार्लियामेंट, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव. तो 52 का द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पार्लियामेंट. Question number 53. The Indian Constitution vested the SD power with सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है. The union government, state government, both union as well as state government, neither the union nor the state government, and option is none of the above. तो 53 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन गवर्नमेंट. पार्लियामेंट इसका इस्तेमाल ना करके यूनियन गवर्नमेंट यूज़ किया गया है भाई. Question 54. In which respect have the center-state relations been specifically termed as municipal relation? किस रिस्पेक्ट में सेंटर स्टेट रिलेशन को म्यूनिसिपल रिलेशन बोला गया है? ऑप्शन ए में क्या है? सेंटर कंट्रोल
of the state in the legislative sphere. Center's control of the state in financial matters, center's control of the state in administrative sector, and central control of the state in planning process. And option E, none of the above. The right answer is option B. Center's control of the state in financial matter. Which of the following article of the Indian Constitution provide that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? Option A, Article 215. Option B, Article 275. Option C, 325. And option D, 355. तो 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 355. When was Jharkhand Area Autonomous Council formed? 56 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1955. सॉरी 1995. 57. What is the source of interstate council? इंटर काउंसिल का सोर्स क्या है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन है, बी में पार्लियामेंट्री लॉ, सी में रिकमेंडेशंस ऑफ प्लानिंग कमीशन, एंड ऑप्शन डी में अप्रूव्ड रेजोल्यूशन बाय सीएम, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव. तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन. Which one of the following is not a feature of General Council? General Council का कौन सा इसमें फीचर नहीं है? It is a constitutional body. Option A. 5 General Council have set up under the State Reorganization Act 1956. Sorry. Chandigarh, although not a state, is included in the General Council. It is an advisory body. तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन ए. इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ये इसका फीचर नहीं है इसमें. Which of the following is not matched properly? Union Parliament's power of adjudication in interstate water dispute. ये आर्टिकल 262 ऑफ आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बी में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, रिवर बोर्ड एक्ट ये 1970 में आया था, नेशनल वाटर पॉलिसी 1987. कौन सही सही से करेक्टली मैच्ड है? तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिवर बोर्ड 1970 में आया था. Question number 60. The regional council are constituted by ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी में पार्लियामेंट्री लॉ है, ऑप्शन सी में क्या है रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, डी में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नी नन ऑफ द अबव. तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्लियामेंट्री लॉ. Question number 61. Who among the following is empowered to establish the interstate council? Option A Parliament, option B President, option C Speaker of Lok Sabha, and option D Prime Minister. E none of the above.
तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। Question number 62. Which of the constitutional provision laid down that the taxes can neither be levied nor collected without the authority of law? Option A Article 265, Option B में क्या Article 266, Option C में Article 300, Option D में Article 368। तो इसका सही आंसर है Article 265 यानी कि ऑप्शन ए। The recommendations of the Sarkaria Commission are related to distribution of revenue, power and function of the president, members of parliament, center-state relationship, and option is none of the above. 63 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 64। Who among the following as a member of सरकारिया कमीशन? सरकारिया कमीशन में कौन मेंबर थे? ये सवाल। ऑप्शन ए वी शंकर, बी के हनुमंथैया, ऑप्शन सी डॉक्टर एस आर सेन, एंड ऑप्शन डी में ओ वी एलगेसन, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस आर सेन। क्वेश्चन नंबर 65। Which commission advocated the establishment of a permanent interstate council called Intergovernment Council? ऑप्शन ए पूंची कमीशन, बी में सरकारिया कमीशन, सी में राधा कृष्णन कमीशन, डी में मोइली कमीशन, और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकारिया कमीशन। Question 66. Which one of the following is not related to union-state relations in India? सरकार ऑप्शन ए सरकारिया कमीशन, बी राज मन्नार कमेटी, डी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, डी पुंची कमीशन, एनी नन ऑफ द अबव। तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 67। Agriculture income tax is assigned to the state government by option A the Finance Commission, option B the National Development Council, option C the Interstate Council, option D the Constitution of India, and option E none of the above, more than one of the above। तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन डी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Question 68. Which one of the following taxes is imposed and charged by the union but is divided into union and state? ऑप्शन ए में क्या है कॉर्पोरेट टैक्स, बी टैक्सेस ऑन आइटम एक्सेप्ट फॉर द एग्रीकल्चर इनकम, सी टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर एंड फ्लाइट्स, डी में कस्टम एंड इवन नन ऑफ द अबव। तो 68 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। The center-state relations in India are influenced by provision of the Constitution 1, second में क्या है the planning process,
थर्ड में क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, एंड डी में क्या है, द डोमिनेंस ऑफ द डिजायर टू डिक्टेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चारों सही है। Question number 70. Which of the following is an extra constitutional and extra legal device for securing cooperation and coordination between the states in India? फर्स्ट में क्या है, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी में द गवर्नर कॉन्फ्रेंस, थर्ड में जोनल काउंसिल एंड फोर्थ में इंटर स्टेट काउंसिल। ये कौन सा सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1 एंड 2 सही है। अब इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which one of the following cannot be the ground for the proclamation of emergency under the Constitution of India? Option A, war, external aggression, armed rebellion, internal disturbance, and option is none of the above. So 71 का D, internal disturbance। Under which of the following circumstances can the president declare national emergency? ऑप्शन ए में क्या है, ए में फर्स्ट में क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन, बी में इंटरनल डिस्टर्बेंस, सी में फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, एंड फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सटर्नल एग्रेशन। इस पर डिक्लेयर होता है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर हम नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, तो इससे भी गलत है, बाकी सब सही है। Under which article of the Constitution it is the responsibility of the Indian government to protect state from external aggression and internal disturbance? तो इसका सही आंसर है 73 का ऑप्शन है आर्टिकल 355। क्वेश्चन नंबर 74। Which one of the following is not a basis to declare national emergency in India? सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वार, ये तो है, बी एक्सटर्नल अटैक, ऑप्शन सी थ्रेट टू इंटरनल पीस, एंड ऑप्शन डी आर्म्ड रिबेलियन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। According to which article a national emergency may be declared by the President of India? Article 352, Article 370, Article 371, Article 395.
तो सिंपल क्वेश्चन है इसका आर्टिकल 352 के तहत। According to Article 352 of the Constitution, the national emergency can be declared in which among the following circumstances? ऑप्शन ए में क्या, द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, बी में क्या, इन्वेजन, सी में इंटरनल डिस्टर्बेंस, डी में क्या, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिविलियन। तो 76 का सही आंसर है ऑप्शन डी। Question number 77. Under which of the following article the President of India can suspend the enforcement of fundamental right except Article 20 and 21? आर्टिकल ऑप्शन ए में क्या, आर्टिकल 358, बी में आर्टिकल 359, सी में आर्टिकल 13, डी में आर्टिकल 356 एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 359। Under Article 356 of the Constitution of India, President rule was imposed for the first time in Uttar Pradesh, Travancore, Cochin, Pepsu, बिहार। तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन सी। Question number 79. Which one among the following pair of articles relating to the fundamental right cannot be suspended during the enforcement of emergency under Article 359 of the Indian Constitution? Option A में Article 20 and 21, B में Article 14, 15, C में Article 16, 70 and D में Article 24, 25। तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन ए। Mainly on whose advice the President rule imposed in this state? Option A Chief Minister, B Legislative Assembly, C Governor, D Chief Justice of High Court and option E none of the above। तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर। वन का, द टर्म ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाई प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो 81 का सही आंसर है ऑप्शन बी पार्लियामेंट के थ्रू। Under which article of the Indian Constitution President rule can be imposed in a state? ऑप्शन ए में क्या, आर्टिकल 370 है, ऑप्शन बी में 368 है, सी में 356 है, डी में 352 है, नन दिए बाब। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 356 यानी कि ऑप्शन सी। Which one of the following is the time limit for the ratification of emergency period by the parliament? ऑप्शन है 14 days, ऑप्शन बी में क्या 1 month, सी में 3 month एंड ऑप्शन डी में 6 month। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 month।
Question 84. A proclamation of emergency must be placed before the Parliament for its approval within 1 month, within 2 months, within 6 months, within 1 year. कौन सा सही आंसर है? तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन ए, विद इन 1 मंथ. Who said the emergency power of the president is a fraud? The constitution. ऑप्शन ए एम के एम मुंशी, बी में बी एन राव, सी में के एम नाम्बियार, डी में एच एन कुनारू. 85 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, के एम नाम्बियार. Question number 86. Which one of the following article of the Indian Constitution has never been implemented into action? Article 60, Article 360, Article 352, Article 356. And option E, none of the above. The right answer for question 86 कौन सा है? 86 का B है, Article 360. How many times has financial emergency has been declared in India so far? एक बार भी नहीं लगा है. ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा. How many types of emergency have been envisaged under the Indian Constitution? ऑप्शन ए 2, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में 1 है. तो 88 का सही आंसर है ऑप्शन बी 3. During a national emergency, the term of the House of People cannot be extended, can be extended till the emergency last, can be extended for 1 year only, can be extended till emergency last but only by 1 year at a time. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है. President rule can be imposed for a maximum period of 1 year, 2 year, 6 year and 3 year. Option none of the above. तो 90 का सही आंसर ऑप्शन डी, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. The President of India may declare the national emergency if there is a threat of external aggression, internal disturbance, armed rebellion and communal clashes. तो ये 4 तो बिल्कुल नहीं होगा. इंटरनल डिस्टर्बेंस ये भी नहीं होगा. ये एक्सटर्नल एग्रेशन सही है और आर्म्ड रिविलियन, और ये कहाँ पे? ऑप्शन डी में है. Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of president rule in a state?
First में क्या dissolutions of the state legislative assembly. Second में क्या removal of the council of minister in the state. थर्ड में dissolution of the local bodies. तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 and 3. Which one of the following authority recommend the principle governing the grant in aid of the revenue of the states out of the Constituted Fund of the India? ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन, बी में क्या इंटरस्टेट काउंसिल है, सी में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी में पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन. Which one of the following institutions will lay down the basic principle for the distribution of the net proceeds of the taxes between the union and the states? ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, बी में क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सी में फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ए नन ऑफ द अबव. 94 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फाइनेंस कमीशन. Generally, in India, Finance Commission is appointed for every 5 years. Option A to determine the financial position of the states, to determine the financial position of the central government, to determine the financial resources of the central government, to determine the share of the state in grants and revenue of the central government, and option E none of the above and more than one. तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी to determine the share of the states in the grant and revenue of the central government. '96 finance are distributed between the center and the state on the recommendations of which of the following? Option A planning commission, B public account committee, C में finance commission, D national development council. यानी none of the above. तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन सी फाइनेंस कमीशन. Which one of the following is not a function of the Finance Commission in India? Devolution of income tax, devolution of excise duty, award of grant in aid, devolution of trade tax, none of the above. तो इसका सही आंसर है डी devolution of trade tax. Main agency to resolve the fiscal disputes between center and state is ए में सुप्रीम कोर्ट है, बी लॉ मिनिस्टर, सी फाइनेंस मिनिस्टर, डी फाइनेंस कमीशन एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव. 98 का सही आंसर है ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन. Question number 99. The provision regarding division of the taxes between the union and the state. Option A can be suspended during the financial emergency. Can be suspended during national emergency. Cannot be suspended during any circumstances. Can be suspended only with the consent of the majority of the state legislature. Any none of the above.
99 का सही आंसर है ऑप्शन बी। Who was the chairman of 12th Finance Commission? A.M. Khusro, K.C. Pant, मोंटेक सिंह एंड सी रंगराजन। 100 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सी रंगराजन। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एवरी रिकमेंडेशन made by the Finance Commission to be laid before each house of the Parliament? ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और 5 ईयर। After the commencement of the constitution, how many finance commission have been constituted? Option A 10, option B 8, option C 9, option D 15, and option E none of the above. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15। The finance commission consists of a chairman and option A 7 other members, option B 5 other members, option C 4 other members, and D such other members as may be decided by the president from time to time। तो 104 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 अदर मेंबर्स। तो अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज आर टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू एलोकेट अमंग द स्टेट्स द शेयर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, थर्ड में टू कंसिडर एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट इन एड फ्रॉम स्टेट, फोर टू सुपरवाइज and report on whether the union and the state government are levying taxes in accordance with the budgetary provisions। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 and 3। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। Which one of the following is an extra constitutional body? Finance Commission, option B में नीति आयोग, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन, डी इंटर स्टेट काउंसिल, एंड ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन abolished by प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी मोरारजी देसाई, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी आई के गुजराल, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, वेन वाज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 10 मार्च 1950,
ऑप्शन बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी 16 मार्च 1951, ऑप्शन डी 20 मार्च 1950, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो 108 का सही आंसर ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। Next question, who had suggested a merger of Finance and Planning Commission? Option A D.D. Basu, option B Balchandra Goswami, option C M.B. Mathur, and option D Ashutosh Pandey, and option E none of the above। तो इसका सही आंसर 109 का ऑप्शन सी M.B. माथुर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन, एंड ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव। तो 110 का सही आंसर है ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन। Next question, who are the first chairman of Planning Commission of India? Option A M Viswesvaraya, B Pandit Jawaharlal Nehru, C P.C. Mahalanobis, D John Mathai, and option E none of the above and more than above। तो 111 का सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 112 क्वेश्चन नंबर, हु वर्क्स एज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो 112 का सही आंसर है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। देखिए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है प्लानिंग कमीशन का? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी वाइस प्रेसिडेंट, एंड डी प्राइम मिनिस्टर, एंड ई एज यूजुअल नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग? पूछा नॉट करेक्ट पूछा है। इट वॉज सेटअप टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, इट हैज़ फुल टाइम चेयरमैन, इट वॉज सेटअप इन जनवरी 2015, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो 114 कौन सा इसमें सही नहीं है? ऑप्शन बी ये फुल टाइम, इट हैज़ ए फुल टाइम चेयरमैन, ये ऑप्शन सही है। Who among the following is associated with नीति आयोग? नरेंद्र मोदी, कौशिक बासु, अमर्त्य सेन, पी चिदम्बरम, ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 115 का सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। एक 116, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज इक्विवेलेंट टू? ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सी कैबिनेट मिनिस्टर, एंड ऑप्शन डी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 116 का सही आंसर है ऑप्शन सी
cabinet minister. Next question. The importance given to the deputy chairman of the planning commission in the official hierarchy of the government is that of option A cabinet minister in the government of India, a Supreme Court judge, option C chairman of a parliamentary committee, ऑप्शन डी में है ए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, सी पी चिदम्बरम, डी मोंटेक एस अहलुवालिया, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो 118 का सही आंसर है ऑप्शन सी पी चिदम्बरम। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ए में प्राइम मिनिस्टर द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, बी में प्लानिंग कमीशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया, सी में सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डी में द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्रेसिडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्राइमरली रिलेटेड टू, ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ 5-year प्लान, एग्जीक्यूशन ऑफ विलेज डेवलपमेंट प्लान्स, फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव। 120 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? ऑप्शन है सेक्रेटरी फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, सी में सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन, डी में सेक्रेटरी फाइनेंस कमीशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the National Development Council formed in India? तो इसका सही आंसर है 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following constitute the National Development Council? 1. The Prime Minister of India, the Chairman, Finance and Finance Commission. थर्ड में Minister of the Union Cabinet, Chief Minister of the State. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 and 1, 3 and 4। Next question, which of the following commissions committee has
recommended the creation of local body ombudsman? तो 125 का सही आंसर है ऑप्शन है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन. The first Lokpal bill was presented in the parliament in 126 का. C is the correct answer 1968. Question number 127. Establishment of Lokpal and Lokayukt in India was recommended by. इसका सही आंसर 127 का ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन. 128. इंडियन मॉडल ऑफ ombudsman इज. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोकपाल. Next question. Which of the following has recommended that appointment of judge to higher court should be through the participation of the executive, legislature and chief justice? तो 129 का सही आंसर है ऑप्शन सी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन. Next question. In which of the following state the office of Lokayukt was first established? ऑप्शन है महाराष्ट्र. The Lokayukt of Uttar Pradesh submits its report to governor. Question number 132. The first Indian state to pass the Lokayukt bill in 2011 is Uttarakhand. See the correct answer. Question 133. The expenses of the Public Service Commission of Uttar Pradesh are charged upon. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. Bora committee was formed to study nexus of politicians and criminals. 135. Name the committee which has investigated and submitted the report on the nexus of politicians and criminals. 135 का सही आंसर है ऑप्शन बी बोरा कमेटी. Who recommended to end Indian Administrative Services and Indian Police Services? तो 136 का सही आंसर है राजमन्ना कमीशन. Under which article of the Constitution a protection of human rights ordinance was issued by the President in 1993? तो 137 का ए आंसर है आर्टिकल 123 123. When did the Protection of Human Rights Act come into force in India? 138 का ऑप्शन डी द सही आंसर है. Who is not a member of the committee for the appointment of the chairperson and members of National Human Rights Commission? ऑप्शन ए में स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, बी में चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और आपका सी में लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव. 139 का सही आंसर है ऑप्शन बी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स.
Next question. In which section of the Human Rights Protection Act 1993 is public servant defined? It's option D. Section 2 MA. According to National Human Rights Commission Act 1993, who among the following can be its chairman? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. The tenure of the chairman of the National Human Rights Commission is 5 years. Which one of the following is not the function of the State Human Rights Commission? तो 143 का सही आंसर है ऑप्शन डी, टू पनिश द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. Which one of the following is not a constitutional body? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. Next question. Which one of the following has the status different from the other three? वन 45 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. Next question. The chairman of the Constitutional Review Commission set up in February 2000 is M.N. Venkatachalya. Next question. The tenure of the Central Information Commissioner is option D. Which act established Public Service Commission in India for the first time? Option C. Government of India Act 1919. Next question. The question considered by the Swarn Singh Committee was related to इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रायोरिटी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन कंपैरिजन टू फंडामेंटल राइट्स. A Mandal Commission who proposed creative massive disputes was set up by मुरारजी देसाई. ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर. पूरा 150 क्वेश्चन का आंसर सेट है ये.